Good morning, everybody. Good morning. So we'll be doing part 1 speaking today, right? What is the art of answering of part 1 IELTS questions, right? How can we score top notch in part 1? See, I believe part 1 creates impression. जो भी आपका impression बनना है evaluator पे, interviewer पे, वो part 1 में बन जाएगा. राइट तो अगर आप उसको वोकैबुलरी दिखाना चाहते हैं या अपना एक्सेंट, चलिए एक्सेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई टोल्ड यू समथिंग, प्रोनाउंसिएशन दिखाना चाहते हैं, अपनी फ्लो, लेस ऑफ पॉजेज, ये सारी चीजें आप पार्ट 1 में कर सकते हैं. व्हाई? द फर्स्ट रीजन इज पार्ट 1 IELTS why we can show off most of the things in part 1. पहली चीज, short answers. आपको पता है we need short answers. ठीक है जी. Secondly, most of the answers are related to you. Question and answers are related to you. So, जब भी हम आपके बारे में पूछेंगे तो सबसे लीस्ट कंफ्यूजन होगी आपको, है कि नहीं? आपको प्रॉब्लम कम होगी, सोचना कम पड़ेगा, बिकॉज इट्स अबाउट यू. ओके, सो लेट्स सपोज देयर इज वन क्वेश्चन रिटन हियर. लेट्स जस्ट ट्राई इट. डू यू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट? अ नॉर्मल क्वेश्चन. द इवैल्यूएटर इज आस्किंग यू व्हाई. इफ यस, गिव मी द रीजन व्हाई डू यू यूज एंड वाई नॉट. अगर वो ये लाइन नहीं भी पूछता आपसे तो भी आप पार्ट 1 में क्या करेंगे? डू यू यूज? यस, आई डू यूज. अपने आप रीजन देंगे. ओके, एंड इन केस यू डोंट यूज देन ऑल्सो यू नीड टू गिव द रीजन. अपने आप. इस लाइन की वेट नहीं करनी है आपने. आपके लिए ये जो लाइन है ये इनविजिबल, इनऑडिबल, नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड. आप अपने आप सुओ मोटो ये बताने वाले हैं उसको रीजन. राइट, आपने रीजन बता दिया. थर्ड लाइन एग्जाम्पल बताएंगे. फिर अगर आप यूज करते हैं तो कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? ओके, एंड अगर आप नहीं यूज करते तो उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही होता है ना. We have to commute from one place to the other. So, if you do use, why you use the public transport and which public transport? And if you do not, then why not? And in place of that, what do you use? तो 3 लाइनों से आंसर बनते हैं. ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट 1 आंसर्स. ओके, जो उसने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, इंस्ट्रक्शन इज डू यू यूज, यस और नो. अपने आप रीजन बताएंगे एंड एग्जाम्पलीफाई करेंगे. परफेक्ट. ठीक है, चलिए अब इसका परफेक्ट आंसर ढूंढते हैं. डू यू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट? यस, आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वेरी इजी आंसर. रीजन बीइंग इट इज वेरी इजीली अवेलेबल. Right, it is quite affordable, and apart from that, the condition of public transport is very comfortable and top notch. Whenever I have to opt from various public transports, the mode I prefer is bus, because it provides me last mile connectivity to my house, to my institute. That's it. This is the answer which which evaluator seeks from you. Let's suppose नहीं, मैं नहीं यूज करती हूँ. No. Then how would you answer? No, I don't use. क्या करते हैं फिर आप? सीधे बोलते हैं no. No, I hate public transport. ऐसे आंसर करेंगे? नहीं कर सकते ऐसे आंसर, बिल्कुल नहीं कर सकते. आइल्स में नेगेटिव आंसर्स नहीं देने हैं इस तरह. आइल्स में नहीं, कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं.
No to direct, abrupt, no answers, negative answers, hate answers, dislike answers, all those answers जहां से आपकी नेगेटिव एटीट्यूड का या माइंड का पता चले, वो आंसर्स आप किसी भी इंटरव्यू में नहीं दे सकते हैं, किसी ग्रुप डिस्कशन में नहीं दे सकते हैं, किसी पब्लिक कॉन्वर्सेशन के दौरान आप इस तरह के आंसर्स नहीं दे सकते हैं. सो इन केस इन ड्यूरिंग अ प्रोफेशनल लाइफ एंड एनीवेयर व्हेन यू आर टॉकिंग you have to avoid no answers. तो फिर कैसे करें, मतलब झूठ ही बोलते रहे? नो झूठ भी नहीं बोलना, सच बोलेंगे, पर एक तरीका होता है. IELTS में there is an art of saying no, right? So what is that art? Let's suppose I do not use public transport, but there must be instances in my life जब मैंने public transport use किया है. ट्रेन हो सकती है, right? बस यूज की होगी. That's not possible. मैंने कभी ऑटो, कैब शेयर की होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. तो आप किस तरह करेंगे? Yes, I use public transport, but not often. Yes, इसका आंसर क्या बनेगा? Yes, I use public transport. Sorry, I use public transport. Yeah, but not often, right? But not often. इसको आप often और often कुछ भी बोल सकते हैं. There's no problem. Often बोलते हैं, that's fine. But not often. ठीक है जी, full stop. फिर और क्या बोलेंगे? और क्या कर सकते हैं? फिर इसके बाद क्या करेंगे? क्या है हमारा नेक्स्ट? रीजन देंगे. अब ये पैटर्न आप उल्टा कर सकते हैं. पहले एग्जाम्पल देके फिर रीजन दे सकते हैं. ठीक है, योर टेक. अब यहां पे अगर मैंने उल्टा करना हो तो मैं कर सकती हूँ, बट नॉट ऑफ्टन. एज आई प्रेफर माई प्राइवेट vehicle, that is car or two-wheeler. Why? आपने बोला yes, I use public transport but not often, as I prefer my private vehicle right? I prefer my personal vehicle, that is car, for shorter distance. Done. However, in case of long distance journey, I opt for train as my mode of transportation. Train as my mode of transportation. Good to go? Yes. What have I told you here? See, जब आप नो बोल रहे हैं ना, तो वो आपसे नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों नहीं चूज करते हो. वाई नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बिकॉज आई हैव माई पर्सनल व्हीकल, दैट इज कार, विच आई prefer for shorter distance journey.
However, whenever I have to travel for long routes, जिसका आप routes बोलते हैं, that is what? Route. For longer distance routes, I prefer public transport. Which mode of public transportation? Train, bus. But you are giving me a top-notch answer wherein you are not directly saying no. Okay. Instead, you're saying yes. I definitely opt for public transport whenever I have to travel for longer distance. Longer distance, I opt for which public transport? वो बताना पड़ेगा. Example देनी पड़ेगी कि ट्रेन है या फिर बस है, क्या है. ठीक है जी. इसको आप इस तरह भी आंसर कर सकते हैं कि अगर तो सिटी में है या इंट्रा सिटी ट्रैवल है. सिटी में ट्रैवल को क्या बोलोगे? इंट्रा सिटी ट्रैवल है. इंट्रा सिटी मीन्स विद इन योर सिटी. अगर तो इंट्रा सिटी ट्रैवल है तो आप क्या करोगे? यू विल ऑप्ट फॉर योर पर्सनल व्हीकल, योर ओन व्हीकल. यू विल नॉट ऑप्ट फॉर public transport. However, if it's intercity or interstate, then you will opt for public transport. Easy? Done? Good to go? Okay, so the question is, did you enjoy art lessons when you were a child? Right now we're talking about negative answers. Okay? So, there are so many rumors about negative answers, right? There would be so many such encounters or instances where you will have no as an answer. ऐसा होने वाला है कि बहुत ऐसे questions पूछे जाएंगे जहां आपको सीधा बोलना होगा या मन होगा कि no, I don't like it, I don't want it. IELTS never say that you cannot say no. IELTS know that there are instances wherein you will give us a response as no. But IELTS always look for etiquettes, manners and proper way of answering. Do you know proper way of interacting? Okay. So they just want to see that can you handle negative questions or negative answers when you are out in public? Do you have sense? Do you have that civic sense? That's it. इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे. You can definitely answer no for a question. But एक तरीका होता है. वो तरीका क्या है? I asked you guys, did you enjoy art lessons? तो सब तो पसंद करेंगे नहीं, है ना? There would be some people who want to say no because they would like science more. कईयों को maths पसंद होगा, right? कईयों को बिल्कुल ही art mundane boring लगता होगा. तो how will you say it? पहले तो बताओ किसको वो नहीं पसंद है art? किसको नहीं पसंद है? All of you like art. Yes. Great. So, as a child, I did not find art very interesting. I always preferred science or mathematics or English, for example. Yeah. So, how would I quote it? Okay. Art is definitely a great subject. However, since my childhood, I have greater inclination towards
science या नॉर्मल आंसर दे सकते हैं हम कि डेफिनेटली इट्स अ गुड सब्जेक्ट, इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट, द मोस्ट क्रिएटिव सब्जेक्ट. हाउएवर, पर सिंस मेरे चाइल्डहुड से आई हैव रियलाइज दैट आई हैव ग्रेट इंक्लिनेशन, झुकाव. इंक्लिनेशन का यहाँ पे मतलब क्या है? झुकाव टुवर्ड्स साइंस. क्या हम यहीं पे स्टॉप कर दें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो व्हाट कैन वी डू? यहां पे फुल स्टॉप है आंसर. क्या मिसिंग है? जब भी आपको एक नेगेटिव आंसर देना है तो साथ में एक उसकी एविडेंस देना है. भाई साहब, अगर आपको नहीं पसंद है आर्ट तो साइंस पसंद है. कैसे? ऐसा क्या है साइंस में जो आपको ज्यादा इंटाइज करता है, ल्योर करता है, कैप्टिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है? व्हाट इज देयर इन साइंस? तो एक रीजन, एविडेंस आप यहाँ पे देंगे. ये तो एग्जांपल होगी ना कि मुझे आर्ट नहीं इतनी अच्छी लगती क्योंकि मुझे साइंस अच्छी लगती है. आपने उसकी जगह मुझे एग्जांपल दे दी. अब एक रीजन का मतलब क्या होता है? एविडेंस. एक एविडेंस देंगे. राइट जी? तो यहां पे क्या एविडेंस बन सकता है? सो व्हाट कैन बी? So we'll give the evidence, that is reason being science is more practical. ठीक है? Whereas I find art लिटिल बोरिंग. इसका बेटर वर्ड क्या होगा? मंडेन. ठीक है जी? सो आई फाइंड आर्ट अ लिटिल मंडेन. So this is going to be a complete answer wherein you are telling me that definitely art is a great subject. However, since my childhood, I have greater inclination towards science. Reason being, I find science to be more practical, pragmatic, whereas art is mundane for me. Mundane means boring for me. Okay? How do you remember mundane? Mundane आप इस तरह से याद करेंगे. जैसे मंडे आपको बोरिंग लगते हैं ना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, इंस्टीट्यूट जाना, इस तरह याद करोगे. मंडे थोड़ा थोड़ा बोरिंग आफ्टर संडे, या ऐसी मंडेन मीन्स बोरिंग. ठीक है? Perfect. You get the logic? So now the next question is, do you draw or paint pictures now? How will we handle it? अगर हमने ऊपर आंसर, पिछले क्वेश्चन में आंसर नो किया है तो क्या हम इसका आंसर यस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अब इसको भी हमें बड़ी पोलाइटली नो करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? उसकी स्टार्टिंग आपने ऐसी की थी कि डेफिनेटली आर्ट इज अ ग्रेट सब्जेक्ट. तो अब आप बड़े हो गए हो. वो आपको चाइल्डहुड के बारे में पूछा गया था, तो अगर आप तब नहीं कर रहे थे तो अब कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो. मोस्टली आंसर नो. कैसे रहेगा इसका आंसर नो में? हाउ विल यू हैंडल? So due to paucity of time, due to paucity means what is the paucity? Paucity का मतलब होता है scarcity. Due to scarcity of time, I have hardly got an opportunity. Opportunity means chance. Opportunity to engage or
participate in any art or painting related activity. Okay, so you can easily politely say that due to paucity of time. ये नहीं I hate art, so I don't draw. No, that's not the answer. Okay, so you can simply say due to scarcity of time, due to time limitation, due to my other engagements, my professional engagements, my academic engagements, or my academic pressure, my work pressure, my professional pressure, my professional commitments. There's so many words. Okay, जिससे आप politely refute कर सकते हैं आपकी participation. Refute means deny. पर वो denial बड़ा polite और kind होना चाहिए, abrupt नहीं होना चाहिए. ये आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी स्पीकिंग टेस्ट में चले जाएं, ये उसका मेन एटिकेट है. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर. दिस क्वेश्चन इज, हैव यू एवर विजिटेड एनी आर्ट गैलरी? which I'm sure that most of the people, they don't go or they've not visited. I think so. Most of the students, they abhor visiting art galleries or museums. आप गए हैं कभी? Okay. So, do you visit art gallery? So do you visit? This can be one question. Next can be, when was the last time? When was the last time? When was the last time you went to? When was the last time you went to an art gallery, an art exhibition? Okay, anything like this. So mostly kids, they don't have the taste of visiting art galleries or museums. I've seen this. So how would you handle this question? You cannot abruptly say no to it. So you, in part one आपके पास टाइम भी नहीं होता है कि आप बहुत लंबे पॉजेस ले सकें, राइट? तो आप कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे? हम पहले यही क्वेश्चन देखते हैं. When was the last time? How can we do it? No cues, no answers. Never been to an art gallery before, but looking forward to go there. Okay, so इसका आंसर कैसे हो सकता है? As far as I remember, I have been to various music concerts. पहले बताया कि मैं किसी ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट एक्टिविटी को देखने गई हुई हूँ, बट आई हैव नॉट बिन. However,
I have not been to art exhibitions lately या फिर recently. Because you cannot put it like this. उल्टा मत करना, ऐसे मत start करना. I have not been to any of art exhibitions lately, but I have been to music concerts. ऐसे start करो. As far as I remember, I have been to various music concerts. However, I have not participated, I have not visited to any of the art exhibitions recently. So this is the way of putting your negative answer. You start from a positive note, ठीक है? Wherein you give this impression to evaluator or your interviewer कि हम definitely music को पसंद करते हैं, performing art को पसंद करते हैं, but I am not kind of a person who is much into the art thing, other art thing, paintings or exhibitions. But if it's about music, then I am in. Great? Good to go? So you have an idea about how to deal with part 1 questions if these questions are not related to your genre, your forte. It is not coming from your area. आपके area से questions नहीं पूछे जा रहे हैं part 1 में, तो आप क्या करने वाले हैं? Firstly, आप positive note पे start करेंगे, अपना answer देंगे. अगर आपको question उसने instructive way में पूछा है, do you, when, what, तो पहले instruction का answer देंगे, उसके बाद example देंगे, evidence देंगे. हमेशा याद रखना, it is I मतलब इंस्ट्रक्शन का आंसर, then you give me another E, that is example, another E is evidence. अगर आप इसको फॉलो करते हैं पार्ट 1 में 3 लाइंस में आंसर, 3 सेंटेंसेस में आंसर देते हैं, IEE, टॉप नॉच, दैट्स फ्लॉलेस, गुड टू गो. पर अगर आप सोचते हैं मैं बस अकेला यस और नो बोल के आंसर खत्म है पार्ट 1 में, ये नहीं होने वाला है. आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि अगर मेरे को म्यूजिक पसंद है, इफ आई आस्क्ड यू डू यू लाइक म्यूजिक, यस आई लव टू लिसन म्यूजिक, देन व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? सूफी म्यूजिक? देन गिव मी, इफ यू गिविंग मी एविडेंस, देन why this Sufi music is, so much you're fond of, why there is fondness of Sufi music? Because it refurbishes my mind, body and soul. So IEE formula says, give me yes or no. Okay, then tell me why this yes or no, and then give me the example.